Hello, dear students. My name is Pooja Rani, English mistress from Government Girl Senior Secondary School Raya, Block Raya 1, District Amritsar. Dear students, today through this TLM, we'll learn about determiners, which is part of 8th class grammar. प्यारे बच्चों, आज ਆਪਾਂ ਇਸ TLM ਦੇ ਥਰੂ determiners ਬਾਰੇ कुछ जानेंगे. Determiners. First of all, we go with definition. Yes, determiners are a kind of noun modifier. They precede and are necessarily followed by nouns. बच्चों, determiners की ਹੁੰਦੇ ਹਨ? Determiners basically noun modifiers ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਾउन ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਥੀਸ ਆਰ ਕੋਲਡ ਨਾउन ਮੋਡੀਫਾਇਰਸ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਆਰ ਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਫੋਲੋਡ ਬਾਈ ਨਾउन्स. ਨਾउन्स ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵਾਂ ਕਿ ਆਈ ਈਟ ਐਨ ਐਪਲ. ठीक है जी. हुण एप्पल नूं जदों एन ने मॉडिफाई किया, एन जो है उरे एक अपने को डिटर्मिनर है, उसने जो मॉडिफाई किया तो आप उसनूं सेंटेंस कित्थे लगाया? नाउन तो पहला, एप्पल तो पहला. सो हुण आपां इस टाइप्स बारे देखांगे जिसनूं मैं एक चैप्टर्स का नाम दिता. चैप्टर 1 आर्टिकल्स, चैप्टर 2 possessives, chapter 3 demonstratives, chapter 4 quantifiers, chapter 5 numerals and chapter 6 ordinals. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇਖਾਂਗੇ. ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਆਰਟੀਕਲਸ. ਵਟ ਆਰ ਆਰਟੀਕਲਸ? ए एंड द. यह बारे तो तुसी बेटा सुनिया ही है, आप 6th क्लास तो करते आ रहे हैं. सो आर्टिकल्स की हैं? एन आर्टिकल इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स नाउन. ऑब्वियसली आर्टिकल भी पहला की तरह ही नाउन मॉडिफाई करते हैं. इत्थे बेसिकली 3 तरह के होंगे, ए एंड द, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ए और एंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਕਿ ए जो है ਉਹ मतलब ਉਹਨਾਂ ਨਾउन्स ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੰਸੋਨੈਂਟ ਸਾਊਂਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ एंड जो है ਉਹ ਵੋਵਲ ਸਾਊਂਡਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾउन्स ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਚ ਆਰ ਡੈਫੀਨਿਟ ਵਨ, मतलब ਜੋ ਯੂਨੀਕ ਹੈ. ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਹੈਵ possessives. Possessive pronouns and adjectives indicate who an object belongs to. ठीक है जी. एक सेंटेंस एक ऑब्जेक्ट है वो किस ਨੂੰ बिलोंग करता है, किस नाउन ਨੂੰ बिलोंग करता है, उत्थे ਆਪਾਂ possessive ਨੂੰ यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव my, your, his, her, their, its, our and whose. Next we have demonstrative. Now what are demonstrative? Demonstratives, they describe the position of an object seen from the speaker's viewpoint. This, that, these and those. ओके, एक नाउन की पोजीशन ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ हैं. एक स्पीकर, एक जो अपना गल करने वाला पर्सन है वो जो किसी नाउन ਨੂੰ किसी ऑब्जेक्ट ਨੂੰ देखता है तो उसके नेड़े या दूर की पोजीशन ਨੂੰ डिस्क्राइब करता है. सो बेसिकली these are this, that, these and those. Next we have quantifiers. Chapter 4, they are adjectives or phrases that serve and answer two possible questions: how many or how much. Okay, these are some words which we use as a quantifiers determiners, like several, a few, another, a lot of, much, many, any and some. Next we have numerals. Numerals are the types of determiners which help to count the total number of a noun. For example, we can say, if we say 4 boys, it means we are counting in it is totally how many
what are the total numbers of the boys are 4. So these are some numerals which we use as a determiners in a sentence to count a noun. 1 2 3 4 etc. And last one we have chapter 6, ordinals. This part of determiners mark the exact position of a noun. Now ਹੁਣ ਨਾਮ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਜੋ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨਲਸ ਡਿਟਰਮੀਨਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਫॉर एग्जांपल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. फर्स्ट हाँ जी फर्स्ट मतलब पहले नंबर ते, सेकंड दूसरे नंबर ते. सो दीज आर सम लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द न्यूमरल्स. सो these are the basics nouns. So I would like to revise again its types and definitions. So we did the determiners basically kind of noun modifiers. They modify a noun and proceed or basically necessarily followed by a noun. noun तो पहला लगाए जाते हैं. और ਆਪਾਂ इस तरह different types भी कर चुके हैं जिमें articles हैं, अपने कोल possessives हैं, demonstrative हैं, quantifiers, numerals and ordinals. So this was all about determiners. Thank you. Have a nice day.